gentlemen and ladies and gentlemen on the dais, friends. Thank you, Smita, to give me some time, in spite of the fact that we have overshot the time. Am I right? But I'll still take just few minutes. To thank people is a great privilege, great honor, and I like to start by thanking our stars, the people who have come from the field. They come here to tell you what we do and how we do. I think they are our stars, and we really can't thank them enough. जितना भी रीड इंडिया की अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं, सब इन्हीं के द्वारा हैं, और इनको हम enough thanks नहीं कर सकते हैं. Thank you very much, and you're going to hear a lot of जो भी इन्होंने demonstrate करेंगे अपना achievements आगे जाके. Right. Thank you very much. Next, I'd like to thank all the staff of Read India who are actually in the field and helping and doing things and translating things on the ground, right? They're doing a great job. We are so satisfied with their performance. And अभी आपको मैं बताता हूँ कि मेरे ख्याल में पिछले 17 साल में रीड इंडिया ने तकरीबन 6 लाख लोगों की जिंदगी पर असर डाला है. And that's a very big achievement, very, very big achievement. And this has been possible because of the staff, because of all the partners, and because of all the people who are involved with the work that we do. Actually, bottom line NGOs का यही है कि we have to make an impact on somebody's life. And if we don't make an impact on somebody's life, whatever we are doing is a waste of time. ठीक है ना? तो ये चीज़ को मद्देनजर रखते हुए रीड इंडिया आगे बढ़ रहा है, पिछले कुछ सालों से काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है. बहुत सारा ज्ञान मिला है आज कल्पना जी से और शर्मा जी से. लेट मी अश्योर बोथ ऑफ देम दैट जो रीड की लाइब्रेरीज हैं, दे आर अडॉप्टिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट ये इन्होंने बताया है. वी आर एक्चुअली डाउन ऑन द ग्राउंड और वहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या करें ताकि लोगों को अट्रैक्ट करें हमारी लाइब्रेरीज में. राइट? दैट इज ऑल. दैट एवरी लाइब्रेरी इज अ यूनिक लाइब्रेरी, एंड व्हाट दे डू इज attracting the people, because you can create a library, लेकिन अगर आप you don't make it attractive, if you don't make it, who will come and use it? The point is, it's got to be, you have to make something attractive, and our people are now learning the art from Kalpana ji to how to make it attractive so that लोग आएं और उसका फायदा उठाएं. हमारी एक लाइब्रेरी है पंजाब में जहाँ पे हमने जितनी नौकरियाँ अलॉट एडवर्टाइज होती हैं उसका चर्चा करते हैं, उसकी डिटेल है हमारे पास. वी कांट ट्रेन पीपल बिकॉज देयर इज वन लाइब्रेरियन, शी इज ट्राइंग टू डू, शी और ही इज ट्राइंग टू डू हिज बेस्ट. बट जो भी नौकरी है आजकल, कोई भी नौकरी जब तक आपकी 6 महीने 9 महीने 1 साल की तैयारी नहीं है, आपको नौकरी नहीं मिलेगी. It is becoming a very, very challenging thing to get a job. Private sector, government sector. So हमारे वहाँ पे इस लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन है कि अगर आपको इस नौकरी के लिए तैयारी करनी है, कहाँ जाएं, कौन सी एकेडमी में जाएं, कितने महीने की ट्रेनिंग है, कितने का खर्चा है. So you have that information which can be shared with the people. So you are making that library attractive by people coming to find out कि भी हमने नौकरी लेनी है, कौन कौन सी नौकरी एडवर्टाइज हो रही है और कहाँ हम इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं. ट्रेनिंग के बगैर में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब. वो पुराना ज़माना जब सिफारिश होती थी, वो बात ख़त्म हो गई है. राइट? नाउ इट्स योर कॉम्पिटेंस एंड यू कैन गेट. Right. So thank you very much to all the libraries which are working for Read India on the ground. They're very, very grateful to them, and it's really interesting to see how innovative they are. Then I have to thank all the experts who are here. There are lots of experts because no NGO can function without external support, external effort, and that is very, very important. And I'm sure
what is important is that all the people who are involved with us, वो काम दिल से कर रहे हैं. You know, it has to be a passion. NGO का काम करना, NGO का job is not a job. It's a passion. If you have that passion, things will get translated and things will be better on the ground. So all the experts who support us, we're very grateful to you and thank you very much for being a support to us. And all the people who have come from outside, we really thank you all to be here today. We thank Sharma ji for being here today and he's given us a lot of words of wisdom. And thank you Bakshi ji and Kalpana ji, Geeta ji. मैं भी इनके साथ 17 साल से जुड़ा हूँ because I'm one of the founders along with Mr. Bakshi. And हमारी जो spirit behind the whole thing is Tony New Power, जिन्होंने ये लाइब्रेरी का काम नेपाल में शुरू किया था और फिर then she wanted to expand into India. So that's how Bakshi ji and I came into the picture. हमने देखा कि ये जो चीज़ करनी है ये बहुत ज़रूरी है and we can make a big difference in the lives of people. And I think for the last 17 years, that's exactly what we are doing, right? And I must thank Geeta ji and Smita ji for helming the entire thing, for translating whatever we are doing on the ground. And thank you one and all. Thank you very much.